सेंटर ऑफ प्रेशर हमारा जो सिलेबस में है is basically in two parts. One is regular shape and one is curvilinear shape. रेगुलर शेप में हमारा आ जाता है जो हमारे सिलेबस में है वो है रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल, सेमी सर्कल एंड ट्रेपीजियम. These are the shapes जो हमारे सिलेबस में हैं एंड इनके कॉम्बिनेशंस भी हैं हमारे सिलेबस में. रेगुलर शेप्स and combination of them, combination of shapes, combination of two shapes. That means it could be a shape which is a triangle and a rectangle. It's possible combination. Or it could be a rectangle and a semicircle, or any combination, any two. And iske liye we've got set formulas. There are set formulas for finding out the area of these regular shapes. Curvilinear के लिए we've got Simpson rules. For curvilinear, we've got Simpson rules. So that's how the gradation works. So I'm starting off on regular shapes today. अभी मैं regular shapes चालू कर रहा हूँ. So so shape number one. And that is a rectangle. So let's say we have a rectangle of length L and breadth B. And this is a side of a cuboid. That means a tank whose one side is this. The rest of the tank is on the other three sides. So ये tank का bulkhead है basically. This is the bulkhead of a tank, or one side of a tank. So and let us say this tank is filled up and the water goes into the sounding pipe. This is the sounding pipe. ये हो गई हमारी water line. ठीक है? That means the water is going into the sounding pipe. तो इस bulkhead का geometric center कहां पे होगा? GC. Will be at what height? B by 2. B by 2. Everybody agrees on that? B by 2. Okay. तो इसका GC B by 2 पे है. तो
Going by our phase 1, remembering that thrust is equal to pressure into area, right? And pressure is depth into density of the liquid inside the tank into area. So thrust is depth into density into area. What is the definition of this depth? Phase 1. Anybody? What is the definition of this depth? So distance from the water line to the geometric center. Is everybody okay with this? Yes, sir. डेप्थ का डेफिनेशन है डिस्टेंस ऑफ द जीसी टू द वाटर लाइन, यानी कि यहां से लेके यहां तक ये मेरा डी है जिसको मैं डेप्थ कह रहा हूं। ये मेरी फेज 1 की डेफिनेशन है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है ये जो हमने थ्रस्ट कैलकुलेट करी ये एक्ट कहां पे कर रही है? Where is it acting? Anybody? Where is the thrust acting? सारे बल्कहेड पे। करेक्ट, सारे बल्कहेड पे एक्ट कर रही है, सारे बल्कहेड पे एक्ट कर रही है ये थ्रस्ट। लेकिन लेकिन जब ये बल्कहेड इवेंचुअली क्रैक करेगा फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम वेयर दिस बल्कहेड विल गिव वे, तो कॉर्नर्स, वो कहां पे होगा? कॉर्नर्स नहीं, वो एक पॉइंट है ये जो जीसी के नीचे है, उस पॉइंट का नाम है पी। पॉइंट पी लाइज बिलो द जीसी and this P is called as center of pressure. P is called as center of pressure. और इस P की क्या सिग्निफिकेंस है? P is at a distance Z from the water line. तो इसका मतलब है ये बन गया KP क्योंकि ये कील है। So P is the center of pressure. It is the point at which the entire thrust is assumed to act. Is assumed to act. It is the entire, it's the point P is the center of pressure at which the entire thrust is assumed to act. Actually, when like what you rightly said, it is acting on the whole bulkhead. But एक point P है जहां से वो bulkhead give way करेगा, वो point P GC के नीचे है। So therefore, that point P is assumed to be the point at which the entire thrust is acting, also called as center of pressure, and that is at a distance Z from the water line. So therefore,
Kp plus Z is equal to sounding, and therefore Kp is equal to sounding minus Z. Are you with me on this? Yes, sir. एंड Z का एक फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द वाटर सरफेस, आई वॉट W वाटर लाइन अपॉन AD. ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, कांस्टेंट रहेगा. Z इज इक्वल टू आई वाटर लाइन अपॉन AD. Z is equal to I water line by AD. That means moment of inertia about the water line. A is the underwater area. A is the underwater area. D हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं. D is the depth. ये D है. D is the depth. D is the depth, which is the distance of the GC to the water line. अब ये I about water line को संभालते हैं. Now this is the axis which is going through the GC. So IGC is equal to IGC is equal to the moment of inertia of a rectangular water plane. The side which is parallel to the axis is powered as 1, L. The side which is perpendicular to the axis is powered as cube, LP cube by 12. So IGC is LB cube by 12 of the rectangular water plane. But I want I water line. I want about another axis which is parallel to this. So there is something called as theorem of parallel axis. Theorem of parallel axis gives me the I moment of inertia about any axis which is parallel to the geometric center axis. So I water line. Theorem of parallel axis says I water line is equal to IGC plus AD square. मतलब moment of inertia will keep on increasing if you keep shifting the axis as far as away as possible. Moment of inertia of this shape will keep increasing at the rate of AD square. This is what theorem of parallel axis says. So I water line इधर का is equal to IGC, that is LB cube by 12 plus A, what area is length into breadth,
and d square. D is the distance from GC to the water line. ये आपका न्यूमरेटर बनेगा इस फॉर्मूले का. Any doubts? Any doubts? हाँ जी. Any doubts, please? Feel free. No doubts? Sir, how this d square came, sir? How this d square came? ये एक सेट फॉर्मूला है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का कि प्लस AD स्क्वायर हो जाता है. इसकी डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, नहीं तो वो भी करा देता, लेकिन हमें खाली बस इसकी एप्लीकेशन यूज करनी है. Okay, sir. सर ये IWL जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाटर लाइन, और एक अनदर वन है IGC मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ About the रेक्टेंगल चीज. अबाउट GC. सर इन हाँ. दोनों के बीच में सर कुछ कोई डिफरेंस है? हाँ, डिफरेंस है. AD स्क्वायर का डिफरेंस है. ये बेसिकली अगर मैं इसकी एप्लीकेशन जहाज के ऊपर बताऊं तो ये है जहाज की सेंटर लाइन. ठीक है. ये है मेरा साइड टैंक. ठीक है. मेरा साइड टैंक जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सपोजिंग DB नंबर 2 या DB नंबर 3 would be LB³/12 about the center line of that tank. मुझे चाहिए moment of inertia about the center line of the ship. So I will need to shift her from this moment of inertia, this GC, to the center line of the ship through a distance D athwartship. So what will be the moment of inertia of that tank about the center line of the ship? Plus AD square. Got it? गॉट इट सर, गॉट इट. So that is the application of this thing जो मैं ये करवा रहा हूँ. Sir, इस बार we will always calculate it in transverse direction, like IT, LBQ by 12. IT or IL. It can be IT, it can be IL, depending on whichever case. So in case of IL, there will be BL³/12 plus Plus LBD square plus AD square. plus AD square. So it will depend कि हम लोग का GC किस तरफ से we have to calculate it. Absolutely right. Okay, तो sir. अगर मैं ऐसे बात कर रहा हूं तो अगर मैं इधर से ऐसे शिफ्ट करता हूं तो ये अलग है, और अगर मैं ऐसे करता हूं और ऐसे शिफ्ट करता हूं तो ये अलग है. तो डिपेंड करता है मैं कौन सा यूज कर रहा हूं. Got it? Is that coming on to shape number 2? Shape number 2 is a triangle with apex downward. So a triangle with apex downwards, a triangle whose breadth is B and whose depth is capital delta. D. And the triangle is filled up to a sounding into the sounding pipe. This is the water line, WL. And this is of course the keel. This is the keel.
Then where is the geometric center of this triangle? The GC of the triangle 2/3 from from where? the base. From the base. From the 2/3 from where? So from the apex. Correct. 2/3 from apex is the GC. 2/3 from 2/3 from apex. So is the GC. 1/3 from the base. So this is 1/3D. This is 2/3 capital D. Is the distance of the GC to the waterline is known as what? Small d, which is the depth. Correct? Is that correct? Yes, sir. Yes, sir. So GC to the waterline is small d, which is the depth. The center of pressure P will lie below the GC somewhere. Distance of P to the waterline is known as what? Z. Z. बिल्कुल ठीक. And therefore this is the KP. Therefore this is the KP. अब हमारा ट्राइंगल कंप्लीट हो गया. तो अब फॉर्मूला लिखना शुरू करते हैं. एरिया ऑफ द ट्राइंगल कितना है? हाफ कैपिटल बी Capital D. capital D is the area of the triangle. Moment of inertia about the GC of a triangle is given by one standard formula, BD cube by 36. Moment of inertia of the triangle about its GC. This is the axis about GC. We are going to be shifting her to the waterline. I about the waterline of the triangle will be BD cube by 36 plus क्या है? प्लस है AD square, A small d square, where A is half BD, half B capital D, small d square. D is the depth. So this is your numerator. Rest of the formulas remains the same. तो मोटा मोटा कहने का मतलब ये है, the only formulas which will change as per the shape will be underwater area, IGC will change, and that is it. Rest everything is constant. ये दो वेरिएबल हैं बस. हर ये Z भी यही रहने वाला है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस भी यही रहेगा, थ्रस्ट भी यही रहेगा, सब कुछ यही रहने वाला है, सिवाय ये दो वेरिएबल हैं, बाकी सब स्टैटिक है. Is it okay? Do you copy this? Yes, sir. Yes, sir. Anybody has any doubt? Definition of A
is underwater area. Please remember. So let us now do a numerical based on these applications. So open up your book. I am on chapter 43 of my book. I am on chapter 43 of my book. Exercise 38. Let me share it with you in case you for the first timers. Just sharing the book with you. Can you see my screen? Yes, sir. This is the chapter that I'm doing, chapter 43, center of pressure. And this is the exercise. We are doing exercise 38. I'm doing question number 12. I'm doing question number 12. And this is a combination of two shapes, basically. So okay. So let's do question number 12, exercise 38. Exercise 38. Question number 12. It says one side of a tank is a vertical bulkhead consisting of an isosceles triangle 12 by 6 over a rectangle 12 by 8. So rectangle is 12 by 8. तो एक रेक्टेंगल बनाओ पहले तो ये 12 बाई 8 का रेक्टेंगल बन गया 12 8 12 8 ये रेक्टेंगल बन गया और इसके ऊपर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है 12 बाई 6 तो 12 तो कॉमन हो गया ये हो गया ट्रायंगल जो कि जिसकी हाइट 6 है और बेस कॉमन हो गया 12 से ये कील हो गई दिस इज द कील we have to calculate the thrust and the kp so हमें thrust निकालना है और kp निकालना है when the tank is full of salt water to a sounding of 15 meter sounding of 15 meter का क्या मतलब है what do you mean by sounding of 15 meter So water level from keel to top 15 meter. तो कैसे बनाऊं 15 मीटर Sir, 12 will be completely. हाँ जी Sir, half of the triangle, 3 meters below the apex of the triangle, will have the water. Till there will have the water. 15 मीटर So 1 meter above the apex. The sounding pipe 1 meter. The sounding pipe. भाई 1 देखो meter the ये sounding pipe. 8 है ये 6 है तो 14 हो गया
मुझे 15 चाहिए, तो 1 मीटर चला गया हेड ऊपर साउंडिंग पाइप में. इज इट ओके? ये साउंडिंग पाइप बनी, ये बना वाटर लाइन, ये 1 मीटर इधर गया. इज दिस ओके विद एवरीवन? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तब मेरा 15 मीटर बनेगा. 8 6 14 एंड 1 15. अब जब अब ये हो गया है. नाउ अब हमारे ये दो शेप अलग अलग हैं. अच्छा, अगर मैं खाली रेक्टेंगल लूं तो इसका जीसी कहां पे लाई करेगा? खाली रेक्टेंगल का सेंटर में. किसके सेंटर में? B/2, sir. Meters. b/2. तो 8/2 यानी कि 4 मीटर्स फ्रॉम बेस. इज दैट ओके विद एवरीवन? यस सर. Yes, sir. Yes. इसको मैं G2 का नाम दे रहा हूं. दिस इज G2. ठीक है, और इसका डिस्टेंस फ्रॉम द वाटर लाइन को मैं नाम दे रहा हूं Δ2 स्मॉल. तो हाउ मच इज Δ2? Eleven meters. 11. Everybody is okay with that? 4 plus 6, 10 plus 1, 11. Now tell me the geometric center of the triangle alone. सर वीडियो थोड़ी सी ब्लर आ रही है सर. वीडियो ब्लर्ड आ रही है? वीडियो सबको ब्लर्ड आ रही है कि? ये सर ये सब blur आ रही है. शेयरिंग बंद कर दी. हाँ, बंद कर दी. ये सब blur है सर वीडियो. अच्छा ब्लर्ड है. एक मिनट में जरा लॉग ऑफ करके फिर लॉग इन करता हूँ. एक मिनट. ओके, अभी क्लियर है सर एकदम. अभी क्लियर है. ओके, नाउ ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द ट्रायंगल कहाँ पे होगा? 2 meter, 10 meter. 10 meter from 4 meter. 2 meter from base. 2/3 from where? Apex. Apex. 2/3 of 6. That means 4 meters from apex. So how much is D1? 5 meters. 5 meters. Is that okay with everyone? So let the combined GC of both the units together as a one system. Let the GC be at some point, which I don't know where it is. This is GC of the combined shape. So that is at a point G, which is between G1 and G2. So by definition, G2 water line
is known as small d, which I have to find. And the center of pressure will lie below the GC. I don't know where, so I'm just placing it somewhere. It could be above G2, it could be below G2. I don't know कहाँ पे होगा, तो मैंने just उसके नीचे डाल दिया. And by definition, P to the waterline is known as Z. And this is known as KP. तो ये मेरा डायग्राम कंप्लीट हो गया. अब मैं क्वेश्चन को चालू करता हूं. So let us say for the triangle alone, what is the area of the triangle? Half into 6 36. into 12 is equal to 36 meters square. This is the area of the triangle alone. Okay. What is moment of inertia of the triangle about G1? Moment of inertia of the triangle about G1 will be equal to BD cube by 36 is equal to 12 into 6 cube by 36. कितना आया? हाँ जी 72. 72. सबका सेम आ रहा है? Yes, sir. 72. 72 M4. Jashandeep, you'll just have to unshare the screen, please. You have to unshare your screen. You can right click and pin the screen so it'll come. Right click, pin to fit to frame. Okay. Tell me I of the triangle about the water line. That is 72 plus AD1 square. That is 72 plus 36 into 5 square. And 70. How much? 972. 972. सबका सेम आ रहा है? Is everybody okay on this? All right. So हमने एक ट्रायंगल का काम खत्म कर लिया है. अब मैं आ रहा हूं रेक्टेंगल पे. For the rectangle, let us come to area of the rectangle. Twelve into 8. 96 meters square. 96 meters square. Let us come to I of the rectangle about G2.
That is 12 into 8 cube upon 12. That is 8 cube, which is 512. 5, 1, 2, M4. I want I about the rectangle about the waterline. So this will be equal to 512 plus 96 into 11 square. One two eight. हाँ जी 12128. 1 2 1 2 8 1 2 12 12 8. Okay. Now I want to find D. That means I want to find out the combined GC. GC of the combined shape. कैसे ढूंढूं? कैसे ढूंढूं? How to find the combined GC? Or how to find D? By taking moments. About what shall I take moments? About waterline? Correct. By taking moments. By taking moments about waterline. Why waterline? Why waterline? Because we have taken the shapes movement also from the waterline only, so we will combinedly take it for the whole body as well. One is that reason. Second reason is Depth, that I we want depth. ultimately मुझे ढूंढना डेप्थ है. अल्टीमेटली मुझे डी ढूंढना है. तो जो चीज मुझे ढूंढनी है मुझे डायरेक्टली वो चीज मिल जानी चाहिए. इसलिए तो basically area of the triangle into lever of the triangle D1 plus area of the rectangle into lever of the rectangle D2 is area total into D. So 36 into D1 5 plus 96 into D2. D2 कितना था? 11 is equal to 96 plus 36 into D. D निकालो. 9.364. Hmm? 9.364. सबका सेम आ रहा है. हेलो. गुड मॉर्निंग सर. मॉर्निंग. हाँ जी बोलो. Sir, Devansh this side, sir. Yesterday you told me to give a call, sir, regarding the C-test examination, sir. हाँ, you talk to Captain Rajat Jain. He'll organize it for you. तुम्हारा मैंने क्लियर कर दिया है. Sorry, sir. You can just talk to Captain Rajat Jain. I've given him. He's your course coordinator. Just talk to him. Okay, sir. Okay. Okay. हाँ जी. So D कितना आता है? 9.364. सबका सेम आ रहा है? Yes, sir. So
Z निकालो. Z is IWL total upon AD. Put the values. IWL total. That will be equal to 972 plus 12 8 divided by area total. Area total is 96 plus 36. कितना हुआ? 9 and 3, 12, 132. Is that correct? Yes, sir. 2D 9.364. इसको टोटल करो and Z निकालो. टेन पॉइंट 598. सबका सेम आ रहा है? Yes, sir. फोन वाईफाई ना जुड़े, ये क्वेश्चन सारा निकल गया. Please mute your mics. Please mute your mics. सबका सेम आ रहा है? Z. So tell me the value of KP now. $4.402. Okay. ये एक आंसर आ गया. दूसरा मुझे निकालना है थ्रस्ट. डेप्थ into density into area. Depth total 9.364. Density 1.025. Area total 132. One two six 6.95. 1266.95 95. टन्स. ये फर्स्ट आ गया. सो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट. हाँ जी. एनी डाउट्स? No, sir. Anybody has any questions to ask? So this was the toughest question of the exercise. That's why I chose this. The rest of the questions should be a cakewalk for you. You should be able to do the rest of the questions quite easily. Of these shapes, ये दो शेप जो मैंने अभी कराई है उसकी. ओके सर. सर जो ये थ्रस्ट है 1266 टन्स. 1 2 ये ओके. ये सर ये थ्रस्ट इफ इन केस अगर ये बल्कि क्रैक हुआ तो ये जो प्री पॉइंट आपने बनाई है वही है ना जो आपने पहले बोला था? करेक्ट. ओके तो अगर ये बल्कहेड क्रैक करेगी तो ये पी पॉइंट्स पे क्रैक करेगी. तो इसलिए जो हमारे जहाज़ों पे अगर आप नोट करो तो
now I'm specifically talking about bulk carriers, okay? तो you can then draw conclusion. Bulk carriers में जो आपका बल्कहेड है वो पॉइंट पी पे क्रैक करता है, तो उसको बचाने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, हॉपर्स डालते हैं, ओके? सो इसको बचाना होता है तो ये क्या किया जाता है, हॉपर्स क्रिएट किए जाते हैं. यू वुड हैव सीन बल्क कैरियर्स में हॉपर्स. यस, बाइक सर्च कर रहा है. ओके राइट, तो ये हॉपर आ जाता है, तो दिस इज हॉपर्ड. सो व्हाई इज द हॉपर देयर? इसीलिए ताकि ये बल्कहेड की लाइफ को बढ़ाया जाए. तो अब क्या होता है दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब 15 साल पुराना जहाज हो जाता है, ये हॉपर जो होते हैं दे स्टार्ट गिविंग वे. तो इन ड्राई डॉक व्हाट डू वी डू, जो जो जहां पे जिस हॉपर की थिकनेस कम होती जाती है, हम उसके सेक्शन बाय सेक्शन उस हॉपर पे के क्रॉप एंड रिन्यू करते रहते हैं. दैट इज द रीजन फॉर इट. ओके सर, गुड, थैंक यू. So that is the importance of these hoppers on these vessels. अरे नेक्स्ट क्वेश्चन में जो फ्रेश वाटर है 11 मीटर्स का, उसमें खाली लास्ट थर्स्ट में चेंज होगा कि सारा चेंज होगा सर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद के वाला जो क्वेश्चन है, हाँ जी सर. 11 मीटर. अब 11 मीटर मतलब वो पानी चला गया इधर बिलो द ट्रायंगल. 11 मीटर मतलब 8 इधर है तो 3 मीटर इधर है. अब अंडर वाटर शेप जो है वो ट्रेपीजियम बन गई. उसका भी मैंने आपको फॉर्मूला कराया नहीं है, भी कराऊंगा. गॉट इट? यस सर. तो वो मैंने अभी आपको, आई हैव नॉट येट डन दैट विद यू. ट्रेपीजियम वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए थोड़ा वेट कर रहा हूँ. उसका सर जो आपने अभी 1 मीटर बनाया वो बस 3 मीटर बन जाएगा. 1 मीटर 3 मीटर बन जाएगा मतलब? ऊपर से सर वाटर लाइन से डिस्टेंस. नहीं, वाटर लाइन ही नीचे आ गई है. वाटर लाइन अब यहाँ नहीं है, 11 मीटर की साउंडिंग पे है. तो 8 और 3 मीटर इधर ट्रायंगल में. तो वाटर लाइन जो है वो यहाँ पे है. ये क्वेश्चन ही पूरा नया बन गया ना. दिस डजंट एग्जिस्ट. दिस इज 3 मीटर. सर इसमें रेक्टेंगुलर वाला फार्मूला सेम रहेगा, सिर्फ ट्रेपेजियम वाला चेंज करना पड़ेगा. करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट. ये इसका ट्रेपेजियम का मैं आपको फॉर्मूला कराऊंगा, अभी मैंने कराया नहीं है. तो ये दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ ट्रेपेजियम एंड अ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल का फॉर्मूला एवरीथिंग विल रिमेन द सेम, ट्रेपेजियम की कहानी बदल जाएगी. तो दिस इज अ न्यू क्वेश्चन बाय इटसेल्फ. पूरा का पूरा क्वेश्चन बदल गया. गॉट इट?